तो फ्रेंड्स फाइनली इसका जो अपना Q5 का ऑडी Q5 का जो स्टेयरिंग है कि इसके अंदर जो पार्ट ख़राब था, जो ये जो हमने कम्प्लीटली इसको चेंज कर दिया। इस टाइप का पूरा हमने मंगाया था, कल आपको दिखाया था वीडियो के अंदर। अभी इसके अंदर हमने फिट कर दिया इसको, और इस ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद में गाड़ी के अंदर इसको सेट करेंगे। घुमा दूसरे वाले को, पुराने वाले को दिखा। ये कंप्लीट आ गया। चल ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई कैसी भी कोई नॉइज़ नहीं है। तो अभी हम रिप्लेस करेंगे इस पूरे कंप्लीट रैक असेंबली को। तो ये है न्यू रैक असेंबली और ये है ओल्ड। तो इसको फिटिंग करेंगे हम इस रैक पावर स्टीयरिंग मोटर के अंदर। अरे काय को चिल्ला रहे हो यार। ये इसका कंट्रोल मॉड्यूल और इसके अंदर है इसका स्टेटर बेसिकली। Talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try to put on the right side, put it up in your mind? But did you ever try to put on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. You run, drive, roll your mind. You
Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like 'em in phase. I just got a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Clouds, so I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on. यहाँ पर हमने फिटिंग कर दी है इसकी स्टीयरिंग रैक, ओके। और उसके बाद अभी हम इन 3 बोल्टों को टाइट करेंगे और इस रैक को कम्प्लीटली फिटिंग करेंगे इस कार के अंदर। वायरिंग हार्नेस इसकी लगाएंगे और लगाने के बाद चेक करेंगे इसमें अभी कोई फॉल्ट वगैरह जनरेट तो नहीं हुआ है या कोई कोड वगैरह तो नहीं आया है। उसके बाद फिर इसको फाइनल फिटिंग करेंगे। ये है इसका यहाँ पर यूजे क्रॉस, इस यूजे क्रॉस को भी फिटिंग करेंगे इसके ऊपर। अभी हम करने वाले हैं इस कार में स्टीयरिंग रैक फिटिंग। दिखाइए ना रैक कहाँ है। और यहाँ पर हमने फिटिंग कर दी है इसकी स्टीयरिंग एंड, डैम्पर और इसका बूट कवर, सब कुछ फिटिंग है और कम्प्लीटली अभी फिटिंग करेंगे।